Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum. तन्हा ऐसे क्यों बेचैन फिरे जागेंगे जरूर ये भाग तेरे कोई जानना ये जोश तेरा कोई जानना जुनून तेरा घूमता ना ताना ना 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 घूमता ना ताना ना Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. A very good afternoon to all you folks out there. Welcome to Hold That Thought, Season 1, Episode 5. With me, your host, Sarah Mashhood. Hopefully, you're done with your Juma prayers and are logging onto your gadgets just about now to enjoy our show. We present to you for the second time a woman from the Torque Forum. You see how this has become interesting already? But before that, let me share what we have for you in the month of March. This March, we're not just talking the talk. We're walking the walk with glow, celebrating inspire, inclusion. We're going reasonable, we're doing it in-house, we're making it impactful. And it's not just impactful, it carries a little celebration at the end of each session in a memorable way. And why not? It's Women Month, so I mean, we've got to go all in. But please know, because the flyer usually says it out loud, but some people don't get it. So for them, Glow offers 5 options: seminar, half-day, full-day workshops, a theater forum, and a webinar. It's all on the flyer. It's easier to understand. It's up to you which one you want to go for. Feel free to reach out to us, check the availability of the Master of the Glow, and let us know. And now let's zoom in on our... We have in the house a seasoned entrepreneur. She leads her family business in Sialkot, ventures into e-commerce. We are working on a local brand of comfortable shoes. Her entrepreneurial drive gives birth to a co-working space, which is now the city's largest. Start Sialkot chapter on Startup Grind to connect the local entrepreneurs. Joins Torque and facilitates capacity building workshops as well as micro entrepreneurship workshops. I'm at a loss for words here, but I do present to you Roshanay Sheikh. Maybe she could help us here. Hi. Hello, Roshanay. Hi, Assalamu alaikum. Welcome to Hold That Thought. How are you feeling? Walaikum assalam. Thank you very much. Hope you're having a good day and I feel great. Especially जो आप लोगों ने अभी introduction play की है, उससे पहले जो music भी play किया है, excellent. Thank you so much. Roshanay, we just heard that you got married. Congratulations. Thank you. Yeah, it was just like 4 or 5 months ago. Wow, that's amazing. MashaAllah. Everyone watching us right now, for this conversation to keep going, do share your questions. Also tell what you do and where you're from. When I ask you where you're from, mention the organization. Roshanay, your entrepreneurial journey, that's quite remarkable. Growing up in Sialkot, a city that not only crafts the world's sports goods, but also built its own airport. How has this environment of innovation and self-reliance shaped your entrepreneurial spirit? Well, to be honest, Sialkot is a city जहाँ पे हर बच्चा जब बोलना सीखता है ना और उससे पूछा जाए क्या करना चाहते हो, मैं एक्सपोर्टर बनना चाहता हूँ. तो ये बिल्कुल बचपन से जो है ना ये हमारे ब्लड में एक चीज आ जाती है. So that's that. Other than that, I mean, I say entrepreneurship is in my blood because, you know, my granddad was an entrepreneur. My father took over his business. तो ये जो चीज़ है ये हमारे बहुत ज़्यादा ब्लड में ही रन कर रही होती है. उसके बाद जो बचपन से हम जो देखते आते हैं यहाँ पे कोई भी इवेंट है,
कुछ भी हो रहा है, it's all the businessmen, business women, all of these business people getting around, और उससे जो है वो एक चीज जो है ना ऑलरेडी ऑटोमेटिकली इंसान के अंदर वो आना शुरू हो जाती है. लाइक I used to be in 2 class 3 class, तभी मैं आती थी. I used to come to work with my dad, at times मैं आके ड्राइंग कर रही होती थी, बट मैं मीटिंग सारी सुन रही होती थी. उसके बाद में when my mom took over, उनके साथ भी ऐसे होता था, मैं अक्सर आ जाती थी और मीटिंग्स वर गोइंग अराउंड और मुझे नहीं पता होता था. बट वहां से जो चीज है ना वो कह लें कि इंस्टिल होना शुरू हो गई थी. सो आई ऑलवेज न्यू व्हाट आई वांटेड टू बी एट द एंड. Wow. Acha, and also leading a business as a two-woman army, yourself and your mom. That's like Batman and Robin, but cooler version, right? How did you both manage to keep the ball rolling in business and beyond? So basically, my mom, she joined the factory 20 years ago. My father just passed away and was very, very, very sudden. So, we weren't prepared at all. तो उसके बाद, but the good part was कि my dad used to always bring my mom to work. हमेशा वो लेके आते थे कि बस तुम बैठ जाओ, कुछ भी ना करो, बस बैठ जाओ. तो for some reason, उसके साथ she was comfortable with the environment. Then a huge role was played by a team. हमारी टीम अभी तक वो चल रही है. काफी ज्यादा लोग उसी टीम के जो मेरे डैड के जमाने के थे वो अभी तक हैं हमारे साथ. तो they made sure that my mom felt very comfortable, right? So उन्होंने जब ज्वाइन किया तो उनके लिए obviously शुरू में तो बहुत ज्यादा चीजें थी, a whole new different world, but the team was good, the family was very supportive. उसके बाद my sisters joined as well for some time, just to support my mom. तो पूरे घर के लिए ना, like फैक्ट्री और घर जो है वो एक ही बन गया हुआ था. In fact we used to be home, फैक्ट्री कॉल्स आ रही हैं रात को 1 बजे भी आ रही हैं, 10 बजे भी आ रही हैं. सो इट वाजंट एट ऑल कि वो फैक्ट्री अलग है और काम अलग है और घर अलग है, ऐसा था ही नहीं. तो उसके बाद जब मैं भी आई तो मेरे लिए द ट्रांजिशन was स्मूथ. हाँ, जो नए आप जब जाते हो वो जो चीज होती है कि यू फील आउट ऑफ प्लेस एंड एवरीथिंग, वो तो होता है. बट उसके अलावा इन टर्म्स ऑफ के एक मेल डोमिनेंट एनवायरनमेंट में वो इतना ज्यादा नहीं था, because my mother, it all made it very comfortable for us, for me actually. Acha, and how was your feeling when you first sold your like first pair of shoes online? How did that feel when you started So I remember I was ecstatic. Acha, so I sold one pair and the guy who first of all मैंने एक contact को भेजा था, someone from my network, right? And then उनको genuinely बहुत पसंद आया and he made just a random post कि thank you Roshanay, these are very comfortable and everything. The next day I opened my back end and I saw 6 orders altogether. And I still remember I was in my car with a friend और मैंने वैसे ही ना खोला. I was like, यार तुम्हें पता है क्या हुआ है? He said, क्या हुआ है? मैंने कहा यार ये देखो ये ऑर्डर है इस पार्क पे. Oh my god, I was and I still remember we were outside McDonald's, ठीक है, और मैं उनका वैल्यू मील खा रही थी. I was like, पीछे करो इसको, पीछे करो, देखो मेरे पास और. Wow, must have been quite a feeling. Acha, or expanding into creating the city's largest co-working space. Matlab, with co-working spaces sprouting everywhere and Sialkot having its unique vibe, how did you plant the seeds for that? Matlab, what was the buzz with the local community? How did that come about to be? So basically, I did my degree in software engineering, right? Because I always knew कि मैंने अपने family business में जाना है, but I also wanted a thing of my own जो मैं side पे run कर सकूँ. तो उसके अंदर IT ही आता था नजर के, जो मैं शाम के time जिसको time देके जो है वो साथ कर सकती हूँ run. तो I always knew that I wanted to get into this sector. Co-working space का trend ऐसा आया था. So when I moved back, I studied in Lahore, and then when I moved back to Sialkot, I was like, यार यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, opportunity wise. I mean, I used to do a lot of social networking in Lahore. हर हफ्ते कोई ना कोई, like just to grow my network. और यहाँ पे फिगर्ड के कोई ऐसी जगह भी नहीं है जहाँ पे आप नेटवर्किंग इवेंट्स करो या फिर किसी कोई प्लेटफॉर्म जिसके थ्रू आप ये चीज शुरू करो. तो मतलब नेटवर्किंग करो, लोगों को भी चांस दो कि वो भी आपस में मिलें. तो फिर आई वाज लाइक यार कोवर्किंग स्पेस एक ऐसी जगह है जो यहाँ पे होनी चाहिए, ठीक है. तो फिर उसके बाद आई प्लान्ड इट फॉर लाइक गुड 2 years आई वुड से, ठीक है. मैंने ऑब्वियसली आई फाउंड सम पार्टनर्स जिनके साथ मैं ये कर सकूं, बिकॉज आई न्यू कि मेरा एक और बिजनेस है, फुली एस्टैब्लिश्ड बिजनेस. तो मैं उसको कोई भी चीज मैं अकेले इसलिए नहीं करना चाहती. इनफैक्ट कि मेरा एक बिजनेस जो है उसको मैं मतलब जब आप एक नया बिजनेस शुरू करते हो ना तो बहुत ज्यादा टाइम देना पड़ता है, ठीक है. तो आई जस्ट वांटेड टू डू इट इन पार्टनरशिप ताकि मैं भी थोड़ा टाइम दूं और दूसरा बंदा भी थोड़ा टाइम दे, राइट. तो आई मेट विद देम एंड आई प्लान्ड वी प्लान्ड
and planned, right? And then I figured that I just keep on planning. ठीक है, मेरे पास अब डॉक्यूमेंटेशन की बात करें तो इतनी बड़ी 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 डॉक्यूमेंट्स, एंड देन वन फाइन डे हम लोग जगह भी देखते होते थे, राइट? वी यूज्ड टू गो टू अ लॉट ऑफ प्लेसेस, ये कैसी है वो कैसी है जगह रेंट आउट करने के लिए, बट अ लॉट ऑफ देम लाइक, बट हम लोग उसको रियलाइज नहीं कर पाते थे. एंड देन वन फाइन डे आई आस्क्ड माई सेल्फ कि यार कोई वजह है जो मैं नहीं इसको इम्प्लीमेंट कर रही, एंड व्हाट इज इट? ठीक है, एंड देन आई फिगर्ड दैट इट्स द फियर. ठीक है, आई प्लान एंड प्लान एंड प्लान, बट आई डोंट पुट इट इनटू इफेक्ट. ठीक है, एंड दैट्स द टाइम व्हेन आई सेड नियत करो कि करना है, असल में करना है. ठीक है, एंड बिलीव मी द वेरी नेक्स्ट डे my partner, he called me, Roshanay, एक बहुत अच्छी जगह मिली है, इधर आओ. And we went to that place, and it was just the place, ठीक है, and that's when I realized the power of intention. पहले मेरी intention नहीं थी, काम था, planning थी. जिस दिन मैंने अपनी, and these are not the words because मैं live बैठी हूँ इसलिए बोल रही हूँ, but actually this happened. मेरी वो turning point for me कि मैंने वो realize किया, तो इस तरह करके जो है वो आगाज हुआ co-working space का. वो कहते हैं ना कि यूनिवर्स also starts to help you. I think this is also that fitted in, right? अच्छा, और your involvement with Startup Grind Sialkot chapter, that's very inspiring. How does it connect with local entrepreneurs, or how does it connect them with each other? What motivated you to start this, और उसका impact अब तक कैसा रहा है? हमने बहुत सारे chapters चलाए हैं यहाँ कराची में, तो we have an idea to how did that come out to be? Yeah. So basically, I was just like, I saw the post of somebody, Startup Grind के, उसने Startup Grind के बारे में post किया हुआ था, so I was very intrigued about what that is. So I went on their website and everything, थोड़ा सा देखा, मैंने sign up कर लिया, कि उनके interview process तक मैं पहुंच गई. Interview process के बाद जो है like उन्होंने बहुत ज़्यादा in depth मेरे साथ interview वगैरह किया, और उसके बाद they were like, ठीक है, ऐसे कर देते हैं, सारा कर लेते हैं. Why? The question is that why I wanted it in the first place, and how did that effect उसके बाद. Why did I want it? Because कि सियालकोट में ना there is a huge gap between the industry sector and the IT sector. ठीक है, Startup Grind is basically mostly for IT entrepreneurs. ठीक है, और सियालकोट में इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योरशिप बहुत ज़्यादा है, लेकिन अब जाके बढ़ती जा रही है, लेकिन पहले IT रिलेटेड एंटरप्रेन्योरशिप बहुत ज़्यादा कम थी. ठीक है, तो that is where I wanted to bridge the gap between the IT sector and the industrial sector, because हमारे जो exporters हैं वो आज तक बहुत ही quaint methods पे चलते हैं. Something as simple as websites, जो यहाँ की बड़ी बड़ी companies भी हैं, उनकी भी websites जो है वो एक होता है प्राउडली प्रेजेंट करना that this is the work my city is doing. ठीक है, वो इतना ज्यादा नहीं है, तो वो बहुत ज्यादा गैप मैंने देखा. That was the primary reason कि मैं स्टार्टअप ग्राइंड के और आईटी के बच्चे निकालूं, और फिर हम इंडस्ट्री से, बिकॉज बीइंग इन द एक्सपोर्ट बिजनेस माई सेल्फ, आई नो कि क्या क्या चीजें हम कहाँ कहाँ पे आके स्टक करते हैं, नंबर वन. सेकेंडली, मेरा जो यहाँ पे लिंक्स हैं विद द इंडस्ट्रियल सेक्टर, ड्राई पोर्ट, चेंबर वगैरह, वो तो ऑब्वियसली हैं ही हैं. सो आई नो दोज गाइज, एंड इफ आई बिकम अ पार्ट ऑफ द आईटी सेक्टर एज वेल, ब्रिजिंग द गैप बिकम्स ईजियर. तो उसको जो है वो करके हमने किया था. और ऑनेस्टली आजकल I've been a little slow with Startup Grind because of the time issues, but we are expanding our team to get that वो boost मिले हमें दोबारा. लेकिन कोविड से पहले तक और कोविड के बाद भी खैर कुछ टाइम बहुत ज्यादा हम लोगों ने इवेंट्स करवाए हैं, और बहुत अच्छा इम्पैक्ट रहा है. I mean, believe me कि हमारे 2-3 इवेंट्स, लाइक आउट ऑफ 6-7 इवेंट्स, अगर आप कहें मैं उस टाइम तक कहूँ, आउट ऑफ 6 इवेंट्स हमारे 3 ऐसे थे कि जो हमारे 120 हॉल की सीटिंग थी, और उससे लोग बाहर खड़े हुए थे. ठीक है, एंड yeah, I mean, it was great. In fact, Startup Grind is what gave me confidence as well कि मैं co-working space को शुरू कर सकती हूँ, because यहाँ पे लोगों को जरूरत है. And after the event, से जो आपको पता चलती है ना चीज, वो इट डजंट, मतलब ऑब्वियसली मैटर करता है कि सोशल मीडिया पे क्या बात जा रही है, क्या नहीं जा रही, बट हैविंग सेड दैट, जो फीलिंग आपको होती है कि जब आफ्टर द इवेंट पीपल कम टू यू एंड से मेरा दिमाग खुला है आज, आई डिड नॉट नो कि ऐसा करना होता है, वैसा, थैंक यू फॉर गिविंग अस द चांस, दैट्स अ रियल विन, राइट? सो वो बहुत ज्यादा हुआ. तो उससे मुझे जो है ना, लाइक उसने जो लोगों की नेटवर्किंग करवाई, लोगों को जो आइडियाज दिए, वो बहुत स्ट्रॉन्ग था. इवन सो कि मुझे जो अपने पार्टनर्स भी हैं, जो मेरी को वर्किंग स्पेस है बीन बैग्स, आई फाउंड माय पार्टनर्स थ्रू दैट प्लेटफॉर्म. तो अगर मैंने अपना बिजनेस उस वजह से शुरू कर लिया, तो आई एम श्योर इट्स डेफिनेटली वेरी इंपैक्टफुल फॉर अदर्स एज वेल. अच्छा, इंटरसिटी कनेक्शंस जो होते हैं,
Did other chapters reach out to you? Did you guys collaborate and do things together? इस तरह का कुछ yeah, were other cities or थोड़ा बहुत होता है people ऐसा, like I'm very much in touch with the chapter director of Lahore, और उसके hmm, बाद जो है मुल्तान वगैरह वालों से भी हेलो हाय है, लेकिन उनके साथ इतना इंटरेक्शन नहीं है। लाहौर वाले के साथ जो है, इफ्तिखार हुसैन नाम है उनका, उनके साथ तो काफी I know ज्यादा है। बट Iftikhar. आई थिंक इट्स एक्चुअली Yeah. अ वेरी गुड आइडिया दैट वी शुड डू दैट मोर ऑफन, एंड इंटरसिटी कॉन्फ्रेंसेस भी हमें करवानी चाहिए। वाकई यूर राइट। Yeah. Okay. So स्टार्टअप ग्राइंड हो गया, कोवर्किंग स्पेस हो गई, एंटरप्रेन्योर जर्नी के बारे में डिस्कशन हो गया. Tell us about your coming into the training industry. How did that turn out to be? Oh, What so honestly, I motivated mean, you? if you really, if you really ask me what I really love doing, that is actually training. Okay? I mean, I think there Wow, are two okay. things that I really like doing. आई मीन एज एन Okay. एंटरप्रेन्योर, एज अ बिजनेस पर्सन, कि आप हर चीज करते हो। मतलब ये कुर्सी अगर सीधी, मतलब आप जब स्टार्टअप होता है तो एक एक चीज आपको खुद ही Hmm. करनी पड़ती है, राइट? सो वी बीन देयर कि हम लोगों ने अपनी ओपनिंग से एक रात पहले जो है वो, मतलब झाड़ू तक जो है मेरे पार्टनर्स में मिलके मारा था, ठीक है? वहां से आप लेकर टू मेकिंग इनसेन काइंड ऑफ डिसीजंस, फाइनेंस वगैरह, लाइक हर चीज आप एज एन एंटरप्रेन्योर करते हो, ठीक है? बट देन Hmm. अगेन, इफ यू आस्क मी कि दो चीजें मैं बहुत ज्यादा क्या इंजॉय करती हूँ, दैट इज नंबर वन पे ट्रेनिंग एंड सेकंड पे सेल्स, ठीक है? Okay. एंड एसेंशियली देयर, मतलब इस तरह से लिंक्ड है कि जस्ट गेट मी इनटू अ रूम फुल ऑफ पीपल, ठीक है? और वहां पे जाके जो है ना, लाइक एक अंदर से इंसान की जो एक चीज निकलती है ना, वो ट्रेनिंग और सेल्स में ही ज्यादा जाके निकलती है, ठीक है? एंड सेकेंडली, इट्स ऑल्सो बिकॉज व्हाई आई रियली लव गिविंग ट्रेनिंग्स एंड वर्कशॉप्स। व्हाई? बिकॉज आई मीन, बहुत ज़रूरी होता है कि आप जो दूसरे बंदे वहाँ पे आपके साथ कमरे में बैठे हुए हैं, टू एक्चुअली Hmm. अंडरस्टैंड देम, वेयर दे आर कमिंग फ्रॉम, ठीक है? और स्पेशली बीइंग इन द बिजनेस एनवायरनमेंट, आई हैव रियलाइज्ड कि इफ यू आर हैविंग अ मीटिंग इवन इन 5 people, राइट, एवरी वन ऑफ दोज पीपल, वो एक डिफरेंट माइंडसेट से आते हैं और डिफरेंटली सोचते हैं, ठीक है? और आप ये नहीं कह सकते कि आपके 5 मिनट के बाद वो आपके साथ सेम पेज पे आ जाएंगे या आपस में एक सेम पेज पे आ जाएंगे, ठीक है? और उन सबको अंडरस्टैंड करके एक सेम पेज पे लेके आना, और वहां से उनको जो उनके दिमाग में डालना चाह रहे हो वो डालना, Hmm. is a very challenging yet interesting thing, and I think Hmm. it's for those especially जो कि empathetic भी होते हैं और समझ the power of understanding where the other person is coming from, वो बहुत जरूरी है। Hmm. तो आई थिंक I'm actually good at understanding where the other person is coming from, and then how to actually enable them to understand in a certain way, वो मुझे अच्छा आता है और शौक भी है और मजा भी आता है। So that's Hmm. why I want to pursue this. और कोई ऐसी एग्जाम्पल या somewhere when you felt that you found the purpose of doing it, find your own purpose maybe, या कोई ऐसी स्टोरी जिसमें a participant came out to you and said, you know, I feel grateful for your session. कुछ ऐसा. नहीं, एक्चुअली सो देयर हैव बीन अ कपल ऑफ इवेंट्स जो मैंने खुद ही यहाँ पे अरेंज करवाए हैं सियालकोट में Hmm. थ्रू माय कोवर्किंग Hmm. स्पेस, और उससे पहले जो है वो चेंबर में जो है वो करवाए थे। इनफैक्ट मैं आपको रिसेंटली बिल्कुल बताती हूँ, रिसेंटली अ फ्यू मंथ्स बैक आई वाज एट पीआईटीबी आरफा टेक्नोलॉजी पार्क, बाय द वे उनके साथ हमारी Hmm. कोलैबोरेशन है, तो दे इनवाइटेड अस ओवर के एक पैनल डिस्कशन थी वहाँ पे। तो वहाँ पे आई वेंट, और वहाँ पे जो है वो हल्का फुल्का लाइक ऐसे हो गया कि इट टर्न्ड इनटू सॉर्ट ऑफ अ वर्कशॉप एज वेल, जहाँ पे इस तरह के क्वेश्चंस आना शुरू हो गए थे कि हम लोग जो है वो डायरेक्शन जो है वो देना शुरू हो गए थे, ठीक है? Hmm. एंड उसके बाद आई वाज, जब खत्म हो गई सारी, आई वाज एट अदर कैफे, मैं और मेरा हस्बैंड वी वर जस्ट हैविंग सम टी, और वहां पे एक बंदी आती है, एंड शी केम आउट टू मी एंड शी टोल्ड मी दैट दिस event was very inspiring for her, but Yeah. more than that what I was glad about it is कि ठीक है, आई मीन इंस्पायर हो गए ये हुए, लेकिन आगे किया क्या, राइट? दैट्स द बेसिक। वो उसने Yeah. मुझे अपनी जर्नी का बताया, और उसके बाद उसने मुझे ये कहा कि अब मैं ये सोच रही हूँ, और आज आपकी भी जो बात थी उससे मुझे ये ज्यादा जो है वो कॉन्फिडेंस Hmm. मिला है, अब मुझे इस तरफ जाना चाहिए, सो Yeah. दैट रियली, वो जो चीज होती है ना, वो बहुत ज्यादा फुलफिलिंग होती है।
बेहतरीन जबरदस्त आई एम प्रीटी श्योर अच्छा एंड वुमेन्स डे buzz is getting louder अब मार्च आ रहा है हमारा so in that spirit what are your top 3 advices for women professionals starting their journey as entrepreneurs or even if it's a job that they're joining in कोई 3 advice All right. सबसे पहले तो I would my first and foremost advice is for every woman out there, and that is to please be financially independent. ठीक है? And I'm saying मेरे जो एक बहुत बड़ा impactful चीज़ थी ना वो I went to China back in 2019 for work and I was stunned to see कि वहाँ पे मैंने 90% women को काम करते हुए देखा है and more so कि मैं I was more comfortable dealing with a woman than a guy not because she was a female or I felt comfortable in her presence no not because of that but because they were so good at it and every hmm female that I've worked with I've always come to the conclusion कि यार लड़कियां जो काम करती हैं ना with responsibility and hmm everything like no oh sexism involved at all but genuinely I've always loved working with girls because of their वो responsibility का जो factor है ना responsibility and commitment these are the two most important things when you're working with somebody right तो वो जो मैंने उनमें yeah देखी है that is too good and see how China is progressing right बहुत ज्यादा progress कर रहा है China तो उससे सबसे बड़ा hmm मेरी advice सबसे पहले ये है कि please work. Secondly, the other advice is that I know that being a woman in this country is, partially आपके लिए मुश्किल कर देता है to be financially independent और उस तरह से जो work environment में जाना बहुत मुश्किल हो जाता है but यहाँ पे मैं ये ज़रूर कहूँगी कि ये एक जगह है जहाँ पे अपने हक के लिए लड़ना भी पड़े तमीज़ से sure but तो लड़ो ठीक है तो यहाँ hmm ये अपना जो राइट है ना ये ज़रूर लो and third thing that I would advise them is that consistency. And this is mostly for all of the people as well, but especially females because उनके लिए मुश्किल होता है मुश्किल से वो काम शुरू करती हैं because of all of the social norms की वजह से थोड़ा सा अगर मुश्किल hmm से शुरू रिस्पॉन्स नहीं मिलता है तो जल्दी से डिसहार्ट हो जाती हैं और हो जाते हैं सारे लोग होते हैं बट मुश्किल जो जर्नी उनकी गुजरी होती है उसमें ज्यादा जो है वो हार्ट ब्रेकिंग होता है बट कंसिस्टेंसी इज द की तो डोंट बी डिसअपॉइंटेड कीप ट्राइंग बार बार हार हार के भी कीप ट्राइंग बट कीप डूइंग दैट So financial independence, fight for your right, and consistency. That's great. एब्सोल्युटली Acha, as we look to the future, are there new projects or ambitions you're excited about pursuing? What's the next chapter like for Roshanay Sheikh? So next chapter is actually pretty exciting. So in terms of my shoe business, I'm Hmm. actually looking at एक तो मैं crazy किस्म की development करवा रही हूँ. We are opening new malls and I'm going into crazy like आजकल मेरा सारा time new designing और क्योंकि trend बहुत ज़्यादा shift हो गया हुआ है so उस पे जा रहा Hmm. है. Other than that, I am trying out different products, wallets, belts and bags. That's like the लेदर की प्रोडक्ट्स जिनमें मैं करने जा रही हूँ उसके अलावा अपैरल्स की तरफ जा रही हूँ सो आई एम गोना ट्राई टू वर्क अराउंड विद ऑल ऑफ दीज प्रोडक्ट्स एंड सी कि किसका रिस्पॉन्स ज्यादा अच्छा आता है और उसके बाद मैं उस तरफ ज्यादा घुसूंगी आई पर्सनली फील लाइक Very गारमेंट्स में मैं nice. बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ अपैरल्स में तो आई थिंक आई एम गोना लाइक अभी तो मतलब काफी हद तक जो है उसका जो स्टार्टिंग का काम है वो हो भी गया है बट आई एम रियली एक्साइटेड फॉर दैट उस तरफ मैं जाना चाह रही हूँ एंड इन रिगार्ड्स टू बीन बैग्स को वर्किंग स्पेस उसमें मैं हम लोग जो है जो हमारा काफी ज्यादा एक्साइटेड है वो हम लोग एजेंसी लाइक स्टाफिंग एजेंसी की तरफ ऑलरेडी चले गए हैं बट अब हमारा जो स्कोप थोड़ा बढ़ता जा रहा है वी हैव हैड अ फ्यू पार्टनरशिप्स Hmm. collaborations so the companies abroad who are looking for virtual assistants people who were like data entry specialists or anything हम उस side पे लेके जा Hmm. रहे हैं agency side पे so these are the two Very things that I'm focusing on in regards to each of my businesses. That's amazing. That's I mean, good luck to that with to you with that as well. Thank एक सवाल जो I didn't write it in my bit, but I want to ask, government से subsidy लेना, वो भी 70%. What was that? How did you manage it? And how was your first meeting with them? Were you like scared? हम How was अभी the feeling? In इंतजार करें Sialkot कि में कैसे पेमेंट थे? दे दे वो हम अभी तक इंतजार करें कि पेमेंट दे दे हमारी रोज कॉल जाती है सब पेमेंट निकाल दें ठीक है Oops. प्लीज लाइक थोड़ी सी निकल भी अच्छा. आई है लेकिन थोड़ी थोड़ी डिलेस के बाद बट लाइक ओहो. सीन ये था कि वी गॉट टू नो अबाउट दिस हाँ. प्रोजेक्ट एक्चुअली दे अप्रोच्ड अस ठीक है उनको हमारी कोवर्किंग से बारे Oh, स्पेस दे वर अगेन द पावर ऑफ नेटवर्किंग वी हैड एन इवेंट इन सियालकोट yes.
जिसमें those Hmm. people came, उन्होंने आके और मैं I was delivering a session जिसमें मैं बता रही थी हमारी co-working space का, तो that Hmm. team approached me there, उन्होंने मेरे से नंबर वगैरह लिया, उसके बाद जब इन्होंने दोबारा शुरू किया तो they called me up again, तो मैंने कहा कि पहले I wasn't that much interested, then फिर थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट बनना शुरू हुआ, उन्होंने भी बहुत पंप किया, फिर मेरे पार्टनर से बात हुई किया, उसके बाद we went to a meeting उनके साथ, जब टेंडर की बिड खुली तो हम लोग उसके लिए थोड़ी सी गाइडेंस वगैरह लेने के लिए गए, एंड दोज गाइज वर वेरी सपोर्टिव। Okay. Wow. उन्होंने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया, और फिर उस तरह से जो है हम लोग उस प्रोजेक्ट में कदम रख बैठे हैं। चले नाइस, अल्लाह करे आपको बकिया भी पेमेंट्स आ जाए इंशाल्लाह। अच्छा रोशानी, we're introducing a new game to the series. It's called Inspire Fire. I'll say a word and you can respond with the first thing that comes to your mind. It could be a single word, या तो कोई story, या तो एक quick thought. Alright. Depends on you. Are you ready? Yes. Let's do this. All right, your first word is innovation. Inevitable. Because Nice. it's inevitably Next up, happening all around the world. so true. Next up is mentoring. Important. Do you want to share a story or something, maybe about your mentor or maybe somebody you mentored? I think mentorship is super important for everybody. I've personally had three mentors who have been really helpful for me. One happens to be Umair, ठीक है, जिनके साथ बहुत ज़्यादा वो बेशक नहीं होती, but I mean, whenever ज़रूरत हो तो I know that I can always go to him for advice. So that's Okay. that. और एक जो है वो सियालकोट में ही हमारे हैं, हसन अवान. He's doing some great work. In fact, if there was this one time जहाँ पे मैं फैक्ट्री में को लेके काफी ज्यादा स्टक कर गई थी, like mentally भी जो है ना इंसान वो ड्रेन हो जाता है. So I went to him and we sat there for 3 to 4 hours, और like it was enlightening, I would say. तो it's important क्योंकि आप कहीं ना कहीं जो है ना आप जाके स्टक हो जाते हैं, and there you need a support. True. अच्छा, resilience. Resilience, that I am and that I will be for the rest of my life. Resilient, I mean. Love it. Community. Community, heartwarming, and home, actually, I would say. Balance. Yeah, I can do that. You mean work-life balance? I'm not Okay. the best person to balance out personal. मुझे सिर्फ अकाउंट बैलेंस पसंद है और वही तक की बात करती हूँ. All right, this was interesting. Our next game is a pretty regular feature, and we've seen guests enjoy it, and I'm sure you're gonna do it too because we do it. This one's the rapid fire round, and are you ready? Sure. Let's fire away. Our first question is one word to describe your leadership style. Democratic. अभी मैं फोन करती हूँ एम्प्लॉइज को रोशानी. The last book you read that inspired you. Okay, I forgot. Rich Dad Poor Dad. Nice. One startup myth you want to bust. Sorry. One startup myth जो आपने burst कर देना है, खत्म कर देना है कि भाई ऐसा तो कुछ है ही नहीं, तो बस myth है. एक बार बिजनेस लॉन्च हो जाए उसके बाद तो जी मजे ही मजे हैं. एक बार 3 साल अच्छा, मजे ही मजे. और एक और सबसे बड़ी है यार, आपका तो अपना बिजनेस है, तुम्हें क्या टेंशन है. That in fact that right there. Okay. A historical figure you'd love to have dinner with. Current में भी बता दो. Current में Elon Musk. Do you really want to have dinner with him? I love the guy. Okay then. Favorite activity when you want to break from life? क्या करते हो आप जब आपको break चाहिए होता है? Do you listen to music? Do you go out? What do you do? Do you drive? I like to play guitar, and then अगर बहुत ही ज़्यादा हो गया है तो maybe a little bit of driving around. And Netflix tour. Oh, definitely. Can't forget that, right? Yeah, you're very multi-talented. मतलब guitar as well.
बट वो गिटार ऐसा है कि मैं नहीं चाहूंगी कि कोई अच्छे बंदे बैठ के सुने ठीक है अगर आपको नहीं कोई पसंद है तो उनको भेज देना अच्छा and if you weren't an entrepreneur what would you be doing now ऐसे तो हो ही नहीं सकता ये मैं this is totally out of the blue okay तो मैं probably sales या training में होती sales and training I will चलो अच्छा if your time is a pie chart for the last 6 months where would most of your time go like if you had to draw it out on a pie chart percentages में बता I think सारा का सारे काम में जाएगा ठीक है मोस्टली सारा नहीं 100% नहीं बट आप कह सकते हैं कि ओके यस 80% डेफिनेटली I gotta call your husband over this well मैं उसको कहती हूँ कि तुम भी मेरी तरह हो जाओ ना देखो कितना मजा आ रहा है काम ही काम करते हैं okay nice one piece of wisdom you've gained and that you wish you knew when you started interesting can I have a few seconds to think about it take it is rapid we call it rapid but usually it becomes a little lesser than that something that I should have known but I wasn't told. Okay, so first thing, yes, definitely, it takes time. It's not easy, or patience is the key. And uske alawa, yes, one thing, the most crucial, I would say, is that in times of stress, decision making becomes harder, but it is the real time to take the right decisions. Nice. Okay. Yeah, nobody told you that whenever you are starting up a business, I think मसला ही तब आता है जब आप हार्ड टाइम से फॉल करते हो और आपको नहीं समझ आ रहा होता कि क्या डिसीजन लेना चाहिए और उस वक्त यू आर प्रोन टू टेक रॉन्ग डिसीजंस में भी बट उस वक्त काम सोच के तो राइट डिसीजंस लेना जो है ना वो कोई बताता नहीं और सबसे ज्यादा जरूरी होता है nice all right great thank you Roshanay for your time For all those interested in reaching out to us for Glow and other workshops, our details are down here. Don't forget to tune in next time for an interesting episode with Ghazala Rashid, ex-PIA. You will get loads and loads of doses of inspiration from her as well. Thank you everyone for joining today and a massive shout out to the Torque team, my solid rock. All of you continue to pursue your thoughts and ideas and never forget it's the steps that create the journey, not the distance covered. Concentrate on each step and cling to that thought. Until our paths cross again, remain curious, keep chasing those dreams and always explore the who that reveals the what. This is Mashhood saying goodbye for the moment. Thank you. ऐसे क्यों बेचैन फिरे जागेंगे जरूर ये भाग तेरे कोई जानना ये जोश तेरा कोई जानना जुनून तेरा घूमता ना ताना ना 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 घूमता ना ताना ना घूमता ना ताना ना 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 घूमता ना ताना ना